मेरे आंदे ही कुछ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ कि which took my entire attention, which required immediate attention. I am proud to be a member and leading the Punjab police team today. मैं 1986 बैच ਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਆਤਵਾਦ ਚੋਟੀ ਤੇ ਸੀ। It was a major challenge we were facing, and we are proud to say ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ सक्सेसफुली आतवाद ओवरकम किया, चैलेंज ओवरकम किया। अज भी वही पंजाब पुलिस है। साडे अफसर, साडे जवान बहुत ही वधिया आउटस्टैंडिंग ने सारे। मैनूं सारे नाल काम करने का मौका मिलिया है। अज फिर कुछ चैलेंज आ गए ने साडे सामने, जिहड़े कि वध के उदों सिर्फ आतवाद कल्ले सी, आज आतवाद हैगा, माफिया हैगा, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम along with narcotics, drugs. So this is a very dangerous cocktail of narco, organized crime, terrorism. ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹਦਾ उदाहरण जिहड़ा है, जिहड़ा सबूत मिलिया सानू, लुधियाने जिहड़ा कोर्ट कॉम्प्लैक्स च ब्लास्ट होया है। But I'm proud to say that the Punjab police team, with each element, officers, the local police, the forensic science team, with the support from the centre, साडे internal intelligence units, they have done an excellent job. And within 24 hours, 24 घंटे दे विच अनरेवल किया इनू। The Ludhiana blast was a very powerful blast. We were all wondering कि की गल है कि क्यों उत्थे जाके इन्ना powerful blast, what is the reason behind it. The main thing, it turned out finally, मौके ते सानू काफ़ी उत्थे leads मिले ने। I suppose you would have seen that we found some tattered clothes, garments, a SIM card, mobile phone, and the tattoo on the arm of the deceased. मौके का मुलाजा करके मैं आप गया सी, माननीय साडे सीएम साहब भी गए सी, होम मिनिस्टर साहब भी गए सी, अपने अफसरां नाल, फोरेंसिक साइंस टीम नाल जायजा करके सानू ये लग्या कि जिहड़ा डिसीज्ड है, he was carrying the explosive, but that was an initial assessment. जिवें जिवें साडी इन्वेस्टिगेशन अगे वधदी गई, सानू यकीन हो गया कि yes, that was the correct picture, what actually happened. What is important is, within 24 hours we could trace the main accused. He turned out to be a dismissed head constable of Punjab Police who had been arrested by the STF for carrying narcotic drugs. The case which had been registered in this regard way back in 2019, this was FIR number 75, dated 11th of August 2019 under the NDPS Act. The STF, under the leadership of Mr. Harpreet Sidhu, additional DG, arrested him, Gagandeep Singh. उस वेले ये थाना सदर दा मुंशी हुंदा सी। 385 ग्राम हेरोइन इहदे कोलों मिलिया। इहदे नाल साथी सी इहदे अमनदीप एंड विकास, जिन्हां कोलों 400 ग्राम हेरोइन होर मिलिया सी। 2 साल जेल ते रहन तो बाद गगनदीप नूं बेल होया। ਇਹਦੇ ट्रायल चल रहे सी, बल्कि 24 तरीक ट्रायल सी ते अगला तरीक 3/2/2022 सी, फरवरी च। It is expected that most probably जेल दे विच ਇਹਦੇ जिन्हां नाल तालमेल होया, he transitioned from
just narcotics, to mafia, to drugs. Now this is a very dangerous combination ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਆਇਆ. This is going to be a very major challenge for us. But however, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, we have tracked out for reasons of the expediency ਕਿ ਸਾਡੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਗਾਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿੰਕਸ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ and from abroad with Khalistani elements, with terror outfits, with mafia outfits, as well as narcotic smugglers, ਇਹ ਉੱਭਰ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਹਮਣੇ. ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ details ਆਉਣਗੇ, we will be providing them to you. But I must congratulate my entire team of Punjab Police for this major achievement. ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਦੁਖਦਾਈ, ਸਾਡੇ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਵਰਨ ਮੰਦਿਰ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ, in the presence of the sanctum sanctorum, a very unfortunate incident. We are all aware. We registered a case of sacrilege in that. कि सचखंड 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, we have set up a special investigation team under the Deputy Commissioner of Police Law and Order and the ADCP and another ACP of Amritsar, and they will be giving us the report shortly. We are still not, hale tak deceased identify nahi hoya, but we are in the process of doing that. We are studying the CCTV cameras, the images, and whatever other inputs we are getting, so we are in the process of doing that. A third incident which took place was at Kapurthala, where एक मकान सी, ग्रंथी सी, पाठी सी, उन्हें अपने मकान 'ਚ प्राइवेट गुरु साहब की प्रकाश की सी. So he claimed it's a Gurdwara, but it was not a regular Gurdwara. Private Gurdwara साहब 'ਚ रखिया सी. ਉੱਥੇ भी यही एलिगेशन आया कि बेदबी हुई है गुरु साहब नाल. पर जिवें we registered a case of sacrilege in Kapurthala also. पर जिवें जिवें साडी तफ्तीश वधदी गई, it turned out that it was not a case of sacrilege. लगदा कि चोरी करन दे नीयत नाल वो शख्स अंदर गया सी. उस बाद ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਰਦਨਾਕ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖੀ घटना सी, which cannot be tolerated. And this is something I would like, एक गल ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, कोई भी अपने हथ से कानून ना लेवे. Please do not take law into your hands. पुलिस हर वेले है, हर मर्यादा का ध्यान रखेगी. इत्थे भी असी गुरु साहब की मर्यादा का पूरा ध्यान रख रहे हैं. We have now registered a case after proper investigation. असी कोई काली नहीं की कि कोई गलती ना होए. साडे अफसर बड़े मैच्योर ने, उन्होंने ध्यान नाल देखिया, वीडियो कवरेज, मौके ते विटनेस नाल सारे नाल गलबात करके पता लग्या बेअदबी दी बिल्कुल कोई भी गल नहीं सी उत्ते मौके ते कपूरथला वाले इंसीडेंट 'ਚ. जिस करके उत्ते फाइनली जिस बेरहमी नाल उस शख्स नूं मारिया गया, 302 का परचा दर्ज होया, एंड द मेन अक्यूज हैज बीन अरेस्टेड. एंड द लॉ इज टेकिंग, होर भी उस 'ਚ इन्वॉल्व सी बंदे, they are being identified and law is going to take its own course. So these were the immediate 3 incidents which we were faced with. The main challenge lying ahead of us, साडे सामने हैगा पंजाब दा चुनाव, the assembly elections. साडे फोर्स दी, पंजाब पुलिस दी पूरी कोशिश है शांतिपूर्वक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस कराए जान. कोई भी भय दा, कोई भी डर दी फीलिंग ना होए. इहदे वास्ते I have had a detailed conference with my commissioners along with my senior officers at the headquarters 'ਚ. All SSPs, range DIGs, IGs, very clear instructions have been passed that the police has to get active. The presence of the police has to be seen. इस करके to create a secure environment, लोगों के दिमाग 'ਚ एक
सिक्योरिटी की भावना आ जाए, इंडिविजुअल सिक्योरिटी तो हट के असी सिक्योर एनवायरनमेंट वाल जाना चाहते हैं। सो आई हैव डायरेक्टेड जिन्ना हो सके इंडिविजुअल सिक्योरिटी को घटाया जाए, क्योंकि इंडिविजुअल सिक्योरिटी इज नॉट अ रिप्लेसमेंट फॉर अ सिक्योर एनवायरनमेंट। सिक्योर एनवायरनमेंट ताई होएगा जे सारे साडी फोर्स एक्टिव होए। ते एक मेरी बहुत वड्डी रिक्वेस्ट है कि पब्लिक वालों सानू पूरी सपोर्ट चाहिए है। our officers, our police stations at all levels, at all places will be welcoming any inputs, any information, any support from the public, क्योंकि ये साडे सांझे, it's a common interest for public interest, state interest, national interest। असे सारे हाथ मिला के we have to move hand in hand। Only then we can survive, progress and develop as a nation, as a state, as a people, as a society। So ਭਾਵੇਂ drugs ਦਾ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ organized crime, ਮਾਫੀਆ ਦਾ ਹੋਏ, ਭਾਵੇਂ terror ਹੋਏ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਏ, please inform। We will very soon, already they are there in the public domain, but I need to activate। ਇਹ ਸਾਨੂੰ 2-4 दिन लग जाएंगे। I have briefed all my officers। The visibility of Punjab Police will be seen on the roads, at points, police stations, wherever required, markets, court complexes, crowded places। जितने हो सके kindly ਤੁਹਾਨੂੰ शक होए, your security, your secrecy will be maintained। Please provide your information। Do not किसी दे नाल रंजिश च कोई इतला ना देवे। देखो, we have to improve as a society। ਜੇ ਆਪਣੀ ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਈਏ, ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਬਰਬਾਦ ਹੋਏਗਾ। ਵੀ ਵਿਲ ਬੀ ਇਨ ਅ ਹਿਊਮਿਲੇਟਿੰਗ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ। I would request the public to turn responsible and mature। As a people, as a state, let us move forward। ਤੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ was number 1 in agriculture, development, even our cycle industry, cycle parts, motor parts, our hosiery, everything we were going right in front। Why have we gone back? ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਈਏ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। Punjab was known for its hospitality। Punjab was known for sports personnel। वो कित्थे गए सारे sports personnel? They should top not only nationally, the greats, I don't have to say, Pardhuman Singh ji, Milkha Singh ji, our hockey teams, I mean, the greats have all been from Punjab। We need to revive this। ਆਪਾਂ क्यों चिट्टे वाल, गैंगस्टरिज्म वाल, माफिया वाल, ये जिन्हें अपना दिखाना है कलाकारी, स्पोर्ट्स से दिखाए, अपना नाम रोशन करे, अपने पिंड का नाम रोशन करे, अपने स्टेट का नाम रोशन करे, अपने देश का नाम रोशन करे, ओलंपिक्स तक जावे। क्यों किसी एक दूजे को मार कुट के, किसी का बर्बादी करके, कितने एक्सटॉर्शन करके, गोली चला के, ये कोई बड़ी गल नहीं है। ये बहुत पहलवान है, अखाड़े च उतरे, बॉक्सिंग च उतरे, जूडो च उतरे, कराटे च उतरे, एथलीट होए, फील्ड च उतरे, हॉकी खेले, फुटबॉल खेले। सानू गर्व होएगा, असीं पंजाब पुलिस से उन्होंने रिक्रूट करांगे। साडे बच्चे गुमराह हो रहे ने, सानू बचाना है। पिंड दे पिंड खाली हो रहे ने, सारे अमरीका, कैनेडा, आस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जाके बस रहे ने। क्यों? पंजाब तो सोना कोई जगह नहीं है। देयर इज नो प्लेस लाइक पंजाब। सारे लहराते हुए खेत, नदियां, दरिया, गुरुआं दी धरती। देयर इज नो प्लेस लाइक दिस। इट्स सो ब्यूटिफुल। आप क्यों छड़ के जा रहे हैं? लुक एट द ट्रैफिक कंडीशंस। कोई ट्रैफिक नु मंदा ही नहीं है। वी हैव टू, इट इज नॉट ओनली द पुलिस, सारे कॉन्शियस होना है, अवेयर होना है। इस साढ़े सारियां दी जिम्मेवारी है। वी एज members of the police and you as members of the public, kindly सारे मिलके आपा काम करिए। There will be many issues। मैं ये नहीं कहता we are perfect। I am not perfect, I am not God, I am human, my officers and men are human, but let us try and improve। Rather than finding fault, I am not blaming anyone for anything। Let us as a people try and move forward। The mafia, the terrorists, the gangsters, I will today request them, the word request, please come and lay down your arms, surrender yourselves। Do not force us to do something ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ, क्योंकि ਅਸੀਂ बहुत सख्ती ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਹੋਏ ਛੋਟਾ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਪਬਲਿਕ ਦਾ, ਸਾਡੇ
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰੇਗਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। I will not tolerate any form of crime or terror in this state, and my force, my team stands by with me. We have been the best, we will be the best, and I expect full cooperation from the public. That is how we had done it before. Sir, we have a few questions. Yeah, thank you very On much. the Ludhiana bus case. Yes, please. So, what is the motive, and was he acting alone, or is there a group which is involved? Also, the recovery of RDX. Miss, regarding the RDX, the material has gone for forensic examination. ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਾਂਗੇ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ RDX, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨਾਲ, ਬਟ ਹਾਲੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਨਕਲੂਸਿਵ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਟੀਰੀਅਲ ਕੀ ਸੀ। ਮੌਕੇ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਸੀ, ਬਟ ਇਹਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ CCTV ਫੁਟੇਜ 'ਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ੱਕੀ ਸ਼ਖਸ ਦਿਸੇ ਸੀ, ਬਟ ਇਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ। ਜੀ 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 ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਰਿੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਕਾਫੀ ਫੈਕਟਸ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਆ ਰਹੇ, ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਡਿਟੇਲ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਪੂਰੀ ਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਡਰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ 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 ਬਿਲਕੁਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮੋਟਿਵ ਕੀ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਤਰੀਕ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਇਹ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਵੀ ਟੈਕਨੀਕਲੀ ਬੜਾ ਸਾਊਂਡ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਇਨ ਕੰਪਿਊਟਰਸ ਐਂਡ ਟੈਕਨੀਕਲ ਮਟੀਰੀਅਲ। ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹ ਤਾਰ ਜੋੜਨ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਐਂਟਰ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਟ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਦ ਕਨਸੈਪਟ ਆਫ ਅ ਹਿਊਮਨ ਬੌਮ। ਜਿਹੜਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਪੋਸਚਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਤੇ ਉਹ ਬਾਥਰੂਮ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਟੂ ਅਸੈਂਬਲ। ਜਿਹੜੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨਸ ਆਰ ਸੁਜੈਸਟਿੰਗ ਉੱਥੇ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ he was in touch with other elements of narco terror in Punjab, in the jails and abroad. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਆਈ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਰੋਕੀ ਜਾਵੇ। ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਡਰਾਈਵ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ STF, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਪੁਲਿਸ STF ਨਾਲ ਹੈ, ਕੱਲਾ STF ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਫਰਮ ਮੀ ਡਾਊਨ ਟੂ ਦੀ SPO ਹੋਮਗਾਰਡ ਸਾਰੇ STF ਨਾਲ ਹੈਗੇ। ਸਾਡਾ ਮੋਟਿਵ ਹੈ ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਆਈ ਰੈਡ ਸਮਵੇਅਰ ਦੈਟ ਕਰੀਬ 40,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟਰਨਓਵਰ ਹੈ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਜੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਅਮਾਊਂਟ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੋਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਇਨਵੋਲਵਡ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹਣਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹਾਲਤ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰੋਕੇ। ਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਡਰੱਗਸ ਆਖਿਰ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ। ਦੇਰ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਓਨਲੀ ਹੈਰੋਇਨ, ਅਦਰ ਡਰੱਗਸ ਆਰ ਦੇਰ, ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਡਰੱਗਸ ਆਰ ਦੇਰ, ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗਸ ਆਰ ਦੇਰ। ਇਹ ਕਈ ਸੋਰਸ ਨੇ ਇਹਦੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਸਮਾਨ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੱਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਜ਼ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਕਰੈਕਟ, ਬਟ ਆਈ ਵਿਲ ਨਾਟ ਰਿਵੀਲ ਇਟ ਟੂਡੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੱਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਨਾ ਆ ਜਾਏ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਓਕੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਹਾਂਜੀ ਆਪ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਕੱਲ ਡੇਟ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਟਾਰਗੇਟ ਨਹੀਂ। ਓਕੇ, ਲੈਟ ਮੀ ਰਿਪੀਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ। ਯੈਸ, ਯੂ ਆਰ ਰਾਈਟ। ਇਹਦੀ ਡੇਟ ਹੋ ਸਕता है पर्सन, हो सकता है प्लेस, हो सकता है एक डर कि ये डेट टल जावे, केस हट जावे, जज साहबान डर जान। दैट इज अपेरेंटली, क्योंकि टेररिज्म वेले भी मोगा च भी एक जज साहब ना ही वाज अटैक्ड,
ਜਗਰਾਉਂ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਦਾਂ ਅਟੈਕ ਹੋਏ ਸੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਚੇਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਵਾਈਲ ਡਿਲੀਵਰਿੰਗ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਵਰ ਅਟੈਕਡ ਐਂਡ ਦੇ ਵਰ ਮਾਰਟਰਡ। ਸੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹੋ ਜੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਏ ਕਿ ਕहीं ਕਿਤੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਕਿਤੇ ਕੁਝ ਕਰ ਜਾਵੇ। ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਦੈਟ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ the honorable judges, we have had a meeting and we have beefed up that security। पर कल्ले courts are a very important element, पर नाल public भी उन्ने important है। all religious places, market places, bus stands, railway stations, we are gearing up everywhere, हर जगह से। just हाँ जी सर कोई एक्सटर्नल कॉन्स्पिरेसी थी क्या? ठीक ये है, बट अभी मैं दसना नहीं चाहूंगा। वी हैव मेड सम मोर। एक मिनट मैडम जी दसो प्लीज। जो आरोपी है उसके पास विस्फोटक सामग्री कहां से आई है? ये वो हम तफ्तीश कर रहे हैं जी, वो अभी वी हैव नॉट कंक्लूडेड। हाँ जी बताइए, हाँ जी बताइए। ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਕੀ ਦਾ ਰੋਲ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਾਂਗੇ, ਬਸ ਹਾਲੇ ਕਨਫਰਮ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। पूरा शक है सानू, पूरा शक है। मैं कंक्लूसिवली नहीं कह सकता पर पूरा शक है, क्योंकि जिहड़ी लीड्स है ड्रग्स बारे, एक्सप्लोसिव बारे कंक्लूसिवली मैं उदों दसांगा, क्योंकि जिहड़ी लाइनअप दिस रही है वो शख्स पाकिस्तान च ही साढ़े इंफॉर्मेशन मुताबिक पाकिस्तान तो ही ऑपरेट कर रहा है। बट दैट आई विल लेट यू नो जो Either the connection is establishing the pro-Khalistani organizations who are sitting in Pakistan, question number 1. Number 2, either this case is... It is indicating, it is not conclusive, it is indicating, yes, that it is Khalistani link, narco-terrorism. It's a very, people turned from mafia to terror, to Khalistan, and linked with drugs. It is indicating that. Number 2 question is this case election ਦਾ ਵੀ, ਸਟੇਟ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਕਚਹਿਰੀ ਦਾ ਵੀ, ਡਿਊ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਲਾਅ ਨੂੰ ਖਰਾਬ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਡਮ। पर सिक्योरिटी लैब भी सामने आया क्योंकि उसमें बहुत सारे लोगों ने बोले कि जी बिल्कुल सही है। आई विल नॉट डिनाई जे साड़ी कोई गलती है, साड़ी सिक्योरिटी लैब से, बट वी हैव डिस्कस दिस एट लेंथ, क्योंकि जज साहबान आप ही कह रही थी दी बार एक्सेप्टेड उते बार तो ही 12 देयर आर 12 एंट्री एग्जिट पॉइंट्स ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ओनली अलोन फ्रॉम द बार। उस तो अलावा 15 20 25 एंट्री एग्जिट पॉइंट ने। सो वी हैव ड्रॉन अप सर्टन प्रोटोकॉल्स जिवें कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट च है, हाई कोर्ट च है। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ, ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। पर डिप्टी सीएम ने बोले कि हुन जो एंट्री गेट्स है, जो सब चीजें हैं उसको घटाया जाएगा। यस वही ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ प्रोटोकॉल ਦਾ ਹੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੈਮ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ वी आर रिव्यूइंग द एंटायर सिस्टम एंड द इक्विपमेंट एंड सिक्योरिटी चेक्स, ये ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। एक मिनट, हाँ जी नहीं जी, not, and this was not likely to be RDX. I have not done a check of the police stations, I cannot tell you, but I am in the process of doing an audit of such things, but nothing to our knowledge। जी पाकिस्तान से कई बार टिफिन बम आए हैं जी, उसका भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है इस चीज के अंदर? मैं हो सकता है मैं आज की तारीख में कुछ हो सकता है, बट ਜਦੋਂ तक ਸਾਡੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਟੀਮ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪੋर्ट नहीं देंगे मैं ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਨਫਰਮ नहीं कर सकता। यस टिफिन आए हो सकता है जीपी साहब ਜਿਹੜਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ जी ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਗਏ ਸੀ ਜੀ ਉੱਥੇ ਕੌਣ ਹੈਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ जी ਜਿੰਨੇ ਨਿਜ਼ਾਮਪੁਰ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਬੇਦਬੀ ਕੀਤੀ ਜੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿ बिल्कुल ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? दे आर बैड एलिमेंट्स। ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਦੇਖੋ दे आर पार्ट ऑफ सोसाइटी एंड अ बैड पार्ट ऑफ सोसाइटी। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ, ਜਦੋਂ STF ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਸ ਡਿਸਮਿਸਡ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਜ਼ਾਮਪੁਰ ਵਾਲਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਹੈ, ਵੀ ਹੈਵ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅ ਕੇਸ, ਅਰੈਸਟਡ ਹਿਮ ਫॉलोइंग ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कि सारी इन्वेस्टिगेशन करके तफ्तीश करके, भावें पुलिस वाला हो भावें कोई है, नोबडी इज अबव द लॉ। ਅਸੀਂ कार्रवाई करांगे, कर रहे हैं तो करांगे। हाँ जी, होम मिनिस्टर ने दावा किया था कि 48 घंटे में BSP का क्रैकडाउन कर दिया जाएगा, लेकिन इतने घंटे इतने दिन निकल गए, इसके बाद कपूरथला में हुआ, फिर यहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है, तो आप मानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर फेलियर है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं मानता। आप आई एक्सपेक्ट कि यू विल अप्रिशिएट कि 24 घंटे के अंदर आज तक नहीं हुआ जी। एक मिनट
आपने दो बातें कही, लेट मी रिस्पॉन्ड। क्राइम दुनिया में हर जगह होता है, वेदर इट इज द यूएस और यूरोप, हर देश में हर जगह होता है। मैं दसना नहीं चाहूंगा किड्डे वड्डे वड्डे हो गए और सेनेट ते हो गया अटैक, कितने कितने हुए नहीं, रोक सके नहीं, एंड दे आर द फाइनेस्ट, यू विल से दे आर द फाइनेस्ट। तो ये तो मतलब नहीं होती फेलियर। पॉइंट इज a new crime, a new dimension arises and we have to live up to it. हर वेले एक नवा चैलेंज आंदा है and we have to react. If we have not reacted, you say fine. देखो जेड़ा श्री हरमंदर साहब है, उत्थे SGPC दी अपनी एक सिक्योरिटी अपनी अरेंजमेंट है, they do not permit us to go beyond a point. So we are in touch with them and साडे, it's a very delicate issue, a very sensitive issue. We cannot rush into it. वो अपनी तफ्तीश कर रहे हैं, असी अपनी कर रहे हैं, and very soon we will come to an end. जेड़ा कपूरथले होया, we sorted it out, we have taken action, we have registered the case, arrested the accused. होर की चाहते हो तुसी? जेड़ा blast होया, he has been identified, we have round up, we have got a lot of evidence, and that entire group is, well, action is being taken. बिल्कुल आपा एक कल इहदी रिव्यू की गई है, अगले, क्योंकि ये चीज़ां रातों रात नहीं होंदियां, 10 ये छुट्टियां, फॉर्चुनेटली छुट्टियां हैं सर्दियां दी, पूरे दी रिव्यू साडी मीटिंग हुई है अफसरां नाल, हाई कोर्ट दे जज साहिबान नाल, बार एसोसीएशन नाल, हर थां ते किया गया। करीब 7-8 साडे कचहरी है पंजाब च, हर थां ते लोकल अफसर जाणगे, रिव्यू करनगे, जज साहिबान नाल मिल के, बार एसोसीएशन नाल मिल के एक एक इंस्ट्रूमेंट देखी जाएगी, जिथे लोड है असी खरीद के नवे देवांगे, रिपेयर करावांगे। द एंटायर प्रोसेस इज अंडर रिव्यू एंड चेंज। जी मेरे सहयोगी ने गल कही कि पंजाब पुलिस ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਏ ਇਹਦੇ ਚ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੋਈ। ਅਮਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਅਰੈਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ 2019 ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੇ ਗਗਨਦੀਪ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਸੀਗਾ ਐਸਟੀਐਫ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਤੇ ਸਰ ਉਹ ਮੁਨਸ਼ੀ ਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁਨਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਯੂ ਨੋ ਬੈਟਰ ਸਰ ਜੀ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਫਾਇਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡਰਗ ਪੈਡਲਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਬੈਡ ਅਨਸਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ बिल्कुल होंदा है, बिल्कुल किसी भी तरह ਦਾ जी जी जी। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੋਰਸ ਜਿਵੇਂ ਖੰਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸਰ, ਸ਼ਰਾਬ ਫੈਕਟਰੀ ਬੜੀ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਬਿਲकुल ਬਿਲकुल है। ਤੇ ਸਰ ਹੁਣ ਇਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। देखो सही, मैनू हफ्ता नहीं होया पूरा आए हुए, गिव मी टाइम, आई एम फेस विद चैलेंजेस, आई एम मीटिंग देम। देखो एक महीना दो, you see what happens, wait and watch। मैं जी हफ्ता पहले मैं जिम्मेवारी हफ्ते दी लेना, अगले तुसी एक महीने बाद इट इज गोइंग टू टेक टाइम, वी विल रिस्पॉन्ड टू इट। We are investigating all aspects. I would not like to reveal for reasons of, keep the investigation. It should not be harmed. Oh, case that जी देखो एक मिनट मैं समझा दवा, आप ये ना समझिए एक ही गिरफ्तारी करना है, सानू कुछ गलतफहमियां हैं। इन्वेस्टिगेशन इज इन्वेस्टिगेशन, वो जो गिरफ्तार हो जाएंगे, whatever law will take its own course। इन्वेस्टिगेशन गिरफ्तारी तो बगैर भी चली जा रही है, ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਟੀਮ ਇਜ਼ ਡੂਇੰਗ ਇਟ, ਇਟ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਟੀਮ, आई एम सैटिस्फाइड। वो ਜਦੋਂ गिरफ्तार हो जाएंगे, नहीं मैं राजनीतिक हैगा, ਜਦੋਂ मैं अतवाद खत्म किया उदों मैं राजनीतिक सीगा, ਜਦੋਂ मैं ड्रग के खिलाफ लिखा मैं राजनीतिक सीगा, ਜਦੋਂ ਵੱਡੇ केस की क्राइम च मैं राजनीतिक सीगा, ਜਦੋਂ मैं मतलब आज मैं राजनीतिक बन गया। देखो आई मीन यू आर बेटर, यू आर वाइज, इट्स अप टू यू। मेरा क्वेश्चन है सर, आपने एक दुखती रग है पंजाब की, आपने जो हमारा यूथ जा रहा है विदेशों में उसका क्वेश्चन उठाया जी, लेकिन आप बता रहे हैं जब आपने ज्वाइन किया पंजाब जैसे जैसे ग्रो किया है, आतंकवाद का दौर खत्म हुआ, आपका रोल भी रहा। एक मैं आपकी पर्सनल राय लेना चाहूंगा, ये बात आपने किस संदर्भ में कही है और
क्या आप मानते हैं कि पॉलिटिकल जो भी माहौल रहा वो जिम्मेदार है कि आज युवा जो है, यूथ जो है हमारा, वो पंजाब में रहना नहीं चाहता, और किस लिए आपने बात की? यस वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल। मैं एज अ सोसाइटी वी हैव टू एक्सेप्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप कहिए सिर्फ पुलिस जिम्मेवार है, सिर्फ पॉलिटिशियन जिम्मेवार है, नहीं, ये आ रहा on the it is being permitted, so we are responsible as enforcement agencies. We should check. ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, they are members of society, our society. ਜਿਹੜਾ ਖਰੀਦ ਰਿਹਾ, they are members of society. ਜਿਹੜਾ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, they are members of society. As a society we have to stand up to this. If we do not, it will not stop. We are all responsible. ਭੱਜਣ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। You kindly watch USA, Canada ਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, drug wars, drug everything is there also. Yes, ਜਿਹੜੇ ਸੰਦਰਭ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, Punjab was such a leading, such a beautiful state. Why can't I would like, and my entire team will do everything possible, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਆਈਏ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹਟਾਈਏ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ I would like they become the best in the world. Why should you go to, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੂਲ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੈਕਸੀ ਡਰਾਈਵਰ, ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ, ਸਾਰੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? जो उत्थे कर सकते हैं ट्रैफिक रूल फॉलो, आप इत्थे क्यों नहीं कर सकते? We will create those conditions, and as a people, we as a police force, हर कोई, you as members of the press, kindly extend my request to them, convey my request कि आप सारी चीज़ें इस तरह, let us change the environment, let's go towards sports. Why towards gangsterism, mafia, crime, drugs? Let's go towards music, culture, bhangra, there's agriculture. ਆਪਾਂ ਮਿਹਨਤ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ we will do menial jobs. Why don't we work in our fields? So that was the context. Let us bring back Punjab to that level.